हम वंचित भी होते हैं और साथ ही साथ शायद गलतियां भी करते हैं। समय बदलता है क्योंकि परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, और उस परिवर्तन के कारण हमारे शब्द और शब्दों के अर्थ और अर्थ का जो गांभीर्य है उसकी प्रासंगिकता भी बदलती रहती है। आज का जो समय है वह समय केवल भौतिक संपत्तियों का समय नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा, इसकी भी सुरक्षा करने का एक दायित्व व्यक्ति के ऊपर आ गया है। और किसी भी चीज की सुरक्षा तभी संभव है जब हम उसकी मूल्यवत्ता को, उसकी गुणवत्ता को समझकर अपना व्यवहार करेंगे। इसी संदर्भ में, इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य एक जो हमारे प्रतिभागी हैं उनमें बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है उसके प्रति एक गहरी समझ विकसित करना है। Ma'am, kindly unmute yourself. Ma'am, kindly unmute yourself. Manjari ma'am. मंजरी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप विषय के विभिन्न आयाम को हमारे समक्ष उद्घाटित करेंगी। आपका महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत के क्रम में मैं करती हूँ समस्त प्रतिभागियों के साथ ही साथ अपनी प्राचार्य और आईआईसी की डायरेक्टर प्रोफेसर लालिमा सिंह जी का, जिनके सहयोग और उत्साह के बिना इस प्रकार के कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित करना शायद संभव ही नहीं है। मैं स्वागत करती हूँ आईपीआर सेल की चेयरपर्सन डॉक्टर मीनू अग्रवाल मैम का, जो यूजीसी कमेटी के भी चेयरपर्सन है। उनके सुझाव, उनके सहयोग के बिना कार्यक्रम संभव नहीं है। कन्वीनर के आईआईसी की डॉक्टर अनुराधा सिंह, उनका इंथुजियाज्म, उनका जो श्रम है वह इस प्रकार के कार्यक्रम को हमारे लिए आसान बना देता है और हम सबको निश्चिंत कर देता है कि उनके साथ जो उनके एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिया मुखर्जी, डॉक्टर तनुश्री रॉय, डॉक्टर श्रुति आनंद, इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, डॉक्टर अर्चना ज्योति, रितु जायसवाल, हरीश कुमार सिंह, सुगंध चौधरी, निशीश सेठ, डॉक्टर रविकांत सिंह, डॉक्टर रिया मुखर्जी, डॉक्टर नीता साहू, सौम्या कृष्ण, प्रियंका गुप्ता, नेहा राय, श्रद्धा राय, डॉक्टर विनीता मिश्रा, डॉक्टर इखलाकुर रहमान सर, डॉक्टर ममता भटनागर, डॉक्टर ज्योति बैजल, डॉक्टर मोहिनी शुक्ला और मीनाक्षी श्रीवास्तव, सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ज्योति जी के लिए 2 पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। स्वागत कर रहा आपका यह सदन, आप मिले विशेषज्ञ के रूप में आपका बार बार अभिनंदन, बार बार अभिनंदन। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जितने भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वर्चुअल मोड पे, मैं सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बैक टू यू डॉक्टर अनुराधा, ओवर टू यू। Thank you ma'am. Now I request Dr. Jyoti Pandey, kindly enlighten us with your knowledge on the theme. Welcome ma'am. Dr. Anuradha for giving such a nice introduction. Next, I am thankful to Dr. Manjari ji, who has given a lot of knowledge about our intellectual property. And I am also thankful to Professor Lalima ji, who has given me an opportunity to give my talk on this platform. And I am also thankful to all the members who are under the umbrella of Dr. Lalima ji, under the able guidance of Professor Lalima ji. Thank you all. और मैं अपनी बात की शुरुआत मंजरी जी की जो उन्होंने बातें बताई उन्हीं से स्टार्ट करना चाहूंगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोग को अब जो समय है उस समय सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही ध्यान नहीं देना है, जो हमारी बौद्धिक
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर भी अब ध्यान देना है, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया है। अगर खोया को हम ध्यान करें तो हम लोग पुरातन समय से, या जिस सनातन धर्म को हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि सबसे प्राचीन धर्म है, उसमें हम लोग ने योग किया, बहुत सारी औषधियां यूज की, उनमें नीम, हल्दी, जिसका पेटेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसे जिस समय से शायद हम लोग कल्चरल या बहुत पुराने समय से हम उसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन उसका पेटेंट हमारे पास नहीं है। तो ये सिर्फ अपने विषय का और अपने जो हमारे पास चीजें थी उनका कितना महत्व है पूरे संसार में, उसका ज्ञान की कमी की वजह से, और पेटेंट जैसी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में अनभिज्ञता की वजह से हमने इस तरह की चीजों को खोया। और अब समय है कि हमारा जो भी इस तरह की चीजें थी, जिसकी बहुत ज्यादा अब महत्व हम लोग को समझ में भी आ रहा है, उसको हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लॉस के थ्रू उसको गेन करें। सो विद दीज वर्ड्स आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय लेक्चर। My screen is visible, Dr. Anuradha? Yes, ma'am. So the topic of discussion of today is relevance of copyright in academic research. Today we are here because of Copyright Day. We are going to celebrate Copyright Day. The 23rd April is known for World Book and Copyright Day, which is organized as annual event and under the umbrella of UNESCO, who promotes reading and publishing copyright. The firm started this program in April 23rd in the year 1995. मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी स्लाइड्स कंप्लीट नहीं दिख रही हैं, हाफ ही दिख रही थी। My screen is not visible. No ma'am, screen is visible but for मतलब zoom out कर दीजिए मैम। Okay. Yes, now okay. No, I think this slide is not complete. Yes ma'am, it's not complete. Then I will present in this form. Yes ma'am. Okay, now it is visible clearly. Yes ma'am, now it is clear. Okay, before starting my lecture, firstly, I want to give my tribute to Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji, for he is known for his creation, like writing creation, as well as for constitution, making our constitution. And he is the person who is most likely to learn, to read, to write, to create new literary work. When he was studying at Columbia University, he has more than 2,000 books. Even though he has financial crisis, and he was only at the age of 22, even though he bought 2,000 books. And while attending the Round Table Conference at London in 1931, he has bought 32 big boxes of books. And at the end of his life, घनश्याम, अब दो हमें देर हो रही है। अरे तुम दे दो उनको। और नवीन तिवारी है, नवीन कुमार त्रिपाठी नहीं है, वो दो। So at the end of his life, he has almost 50,000 books in his library, and almost 65 years after his death, his writing was not published completely. Only half of his writing remained unpublished, and we have to work in this direction so that when we are saying that we are celebrating World Book Day or World Copyright Day,
we have to consider that eminent personality in our past has to get privilege, has to get their recognition in this field. Now I will come to intellectual property right. As we all know that property is of two types. Till date, the most of the person knows that property is of two types, immovable and movable. और movable में सभी लोग जानते हैं जिसको हम move ना कर सकें, like house, agricultural field, and immovable properties like car or your Rolex watches, costly watches, jewelry, all are movable. And for that, we take extra care. Like we have registration paper of our house, registration paper of our car. We take insurance for that. We keep our jewelry in the locker. We take all the precaution to save it. However, third kind of intellectual property, which we earlier not consider as property, that's why we lack patent of neem and turmeric. Nowadays, we are also consider this property as the property like immovable and movable property. So the intellectual property totally based on intellect. What is the knowledge we have? जितना भी हमें ज्ञान है, उस ज्ञान से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है. अब अगर प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है तो दो चीजें हो सकती हैं कि वो चोरी हो सकती है या कोई उससे आपको छीन के लेके जा सकता है. When we consider the immovable and movable property, then theft will happen. However, in case of intellectual property, the term piracy is there. So theft is to take something out of someone else's possession. However, piracy is IP infringement. Piracy is the illegal replication of an original recording for commercial gain without the consent of the owner. That's why piracy is totally related to digital things, like the creation you have create in the digital form that can be copied by someone without taking your permission, then the piracy will happen. Piracy is a kind of theft which leads to a loss to the owners of the property. So who are the owner of that intellectual property? Like you have created some good paper, good book, and without your consent, someone has taken the part of that book or paper and publish it elsewhere. Okay, and then elsewhere in low price, then everyone will take that one because it is of low price and you will suffer from property loss. Besides economic loss, piracy also affects the creative potential of a society as it denies authors and artists their legitimate dues. तो इस चोरी से सिर्फ आपका इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है. आपने जो क्रिएट किया, आपने मान लीजिए कोई बुक लिखी थी, आपने उसमें टाइम दिया, सोचा, लिखा, और फिर क्या हुआ, उसे किसी ने आपसे बिना बताए कॉपी कर ली और लो कॉस्ट एडिशन में पब्लिश कर दिया. तो उससे क्या हुआ कि आपने जो क्रिएट किया, इतने दिन महीनों आपने उस पर मेहनत की, सोचा, बनाया, और वो कोई और लेके चला गया. अब इस केस में ही हम आपको दो इम्पोर्टेंट केसेस बताएंगे और उसमें शायद आप लोग को मालूम भी कुछ लोगों को होगा. जो बहुत ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे शायद उनको नहीं ध्यान होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन या आपके फैकल्टी मेंबर्स जो होंगे उनको ध्यान होगा कि 90s के एरा में हम लोग कैसेट्स सुनते थे. उस समय जो कैसेट्स आते थे वो HMV का आता था, आपका वीनस का आता था, टिप्स की कंपनी होती थी, और वो एक एक कैसेट्स 150 तक के होते थे. फिर एक टी सीरीज करके कंपनी आई जिसके ओनर गुलशन कुमार जी थे, और उन्होंने कॉपीराइट लॉ जो उस समय इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था उसको, उसमें जो कमियां थी उसके बेसिस पे कि उस कमियों को आधार बना के उन्होंने इस अपनी कंपनी को स्टार्ट किया. He has took commercial songs and engaged some lesser known singers to whom he has paid very less amount and create a version recording of the song and sold them at much lesser prices. Such version recordings often made more sales than the rights holder themselves. अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो वर्जन रिकॉर्डिंग बना रहे थे तो ऐसे सिंगर्स से बना रहे थे जो कि उस समय नए थे, वो इतना पैसा उनसे नहीं ले रहे थे, और उन्होंने रिकॉर्डिंग
लो कॉस्ट में बना के, और उनके जो कैसेट्स की कॉस्ट थी उस समय 20 या 25 रुपए हुआ करती थी। अब लोगों को गाने सुनने को मिल रहे हैं, मधुर आवाज में है, नए लोगों को चांस मिल रहा है, तो उनका सारी तरफ सेल बढ़ गया। जो सुनने वाले थे उनको भी बहुत पसंद आया, कम पैसे में उनका भी काम हो रहा था और उनका बिजनेस भी बढ़ रहा था। लेकिन जो पहले से एस्टैब्लिश कंपनियां थी और जो बहुत वेल नोन सिंगर्स थे, उनको ये दिक्कत हुई कि उनका फिर जो बिजनेस था वो डाउन होने लग गया। अब यहाँ पे क्या था कि जो अच्छे संगीतकार भी थे उस टाइम के, जिनके गाने आते थे HMV में या टिप्स में, उनको लॉस इस तरीके से हुआ कि गाना जो कंपनीज थी वो कम रिकॉर्डिंग शुरू की। उस समय चूंकि लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो देन दैट टाइम VP Singh was the prime minister, and all that person will go to VP Singh ji. But VP Singh told them that you don't know the strategy of the business. You are not a good entrepreneur. Gulshan Kumar is a very good entrepreneur, and he has started his business, and his business is growing like anything, and all of you are jealous of him. That's why you are coming here. तो इन बातों से वो लोग भी हर्ट हुए कि हमारा जो चीजें थी उसको नहीं वैल्यू दी जा रही है, और जो पीछे से आया, और वो किंग, उस समय किंग के उससे जाने लग गए थे गुलशन कुमार जी। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब, अब अगर आप लोग को याद होगा तो हम आपके कौन मूवी आई थी उस समय जब वो मूवी आई तो उसका कॉपीराइट, चूंकि वो बिजनेस को देख रही थी तो उसने पहले ही उसके सारे कॉपीराइट को अच्छे से कर लिया था, और सुप्रीम कोर्ट में उसने केस भी डाल दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन भी दे दी थी कि उनके 3 साल तक राइट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगे, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन गुलशन कुमार जी ने उसके भी गाने उसी तरीके से T सीरीज में करके मार्केट में कर दिया। वहां से उनको दिक्कत शुरू हो गई, और जब वो केस कोर्ट में गया तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, यू हैव टू टेक स्टैच्यूटरी कंपल्सरी लाइसेंस फ्रॉम द ओनर, हु इज द ओनर ऑफ दैट क्रिएटिव वर्क, यू हैव टू टेक द स्टैच्यूटरी permission from that owner by giving license fees. So the void in the Copyright Act, which allowed such version recordings on the service of a notice on the right holders and payment of a statutory compulsory license fees, was applied in that case. And after that, all that recordings were taken as pirated ones. Next copyright case was with film Zanjeer, which came in 1973, and the legendary actors were Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan. The script was written by Salim Khan, and the producer was Prakash Mehra. And Prakash Mehra has taken the copyright of Zanjeer, but he was passed away in 2009. After that, his son Puneet Prakash Mehra will be the lawful hire of that copyright. But some people of Box Cinema has broadcast that movie in the year March 2020 without taking the permission from Puneet Prakash Mehra. Then Puneet Prakash Mehra has filed a complaint against that Box Cinema owner in Juhu police station in October 2020. तो ये भी एक केस हुआ, उसमें शायद ओनर को ये लगा हो कि अब तो प्रकाश मेहरा जी नहीं रहे तो हम इस मूवी को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उनको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आइडिया नहीं रहा होगा, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको उसी तरह के राइट देती है जैसे आपको इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी राइट्स में मिलते हैं, कि अगर कोई मकान का ओनर है, उसकी डेथ हो गई तो जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, अगर उसके ओनर की डेथ हो जा रही है तो उसका जो भी हायर होगा, जो भी उत्तराधिकारी होगा, उसको वो कॉपीराइट ट्रांसफर हो जाएगा, उसको बिल्कुल उसी तरीके से राइट्स मिल जाएंगे जो पहले उसके फादर को थे, कि वो उसको बेच सकते थे, उसका लाइसेंस फीस ले सकते थे, बिल्कुल उसी तरह के राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये दो केस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉपीराइट से ही रिलेटेड केस है। बिफोर गोइंग टू कॉपीराइट,
I'm going to discuss intellectual property right in more depth. Intellectual property is basically a creation of intellect or relates to intellect. Whatever you are going to create with the help of your knowledge or with the help of your brain is come under intellectual property. Intellectual property is only a property in fiction or a fictional property and not a real property. Like real property, you are seeing that house is there, car is there, jewelry is there. But the intellectual property is the fictional property, and firstly it is intangible, and when you replicate it or reproduce it on the paper or on CD or computer chips, then it becomes tangible item. Intellectual property rights are legal rights governing the use of creations of the human mind, that is intellectual property. So to protect these intellectual property, which are fictional property or intangible property, which is converted to tangible property, is being protected by intellectual property rights. IPR usually gives the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. That means, like with immovable or movable property, the owner is that property belongs to owner to whole life. However, IPR is only for limited time. And after that, you again have to file the application, then you get further more time. So intellectual property right is concerned with ownership of one's intellectual output, which is unique, novel, and unobvious, having some economic value. But the uniqueness and novelness is not applied to copyright. It applied only to patent. Legal protection is granted to the owner or creator of the intellectual property under different acts, such as patent acts, copyright acts, trademark acts, etc. The owner of an intellectual property can earn income by selling the rights of using the same. Now, the significance of IPR, it avoids duplication of research. Whatever you are creating in your lab is not duplicated by other person without your permission. Indicator of achievements, those who have number of patents or number of publications, that means he is achieving or she is achieving success in her career. Helps industry to improve existing technology to produce better and cheaper products. Like if you are going to patent your creation, which you created in your lab, and that creation is very applicable to social life, then industry will take that patent to you by giving some money, whatever money you asked, or they offered some good amount of money, and then they transfer that technology and get profits. Providing reward as exclusive right for disclosure, making profits royalty through technology transfer or licensing, utilizing the published patent specifications. Sometimes patent is based on medicinal important molecules, then that specification is published during patent publication, and then someone go through that specification and then ask you to give me this patent, and you will give with some royalty. They will offer some royalty, and you will transfer the specification. Hence, IPR is an asset which can be bought, sold, mortgaged, or licensed. Now, need for protection of IP. This section I have already somewhat discussed earlier. Any innovation generally involves huge input in terms of money, talent, skill, time, labor, etc. Thus, it becomes evidently essential to protect the IP, to reserve its exclusive rights and possession, and prevent use by others. Most of all are from science field, or even from arts field. When we create something, we invest sometime money, sometime our talent, and most of the time we invest our time, our skill in that thing to create something new. And once it has been stolen, then not only economic loss, our mental
status also going down, कि हमारा ये सामान जो हमने बहुत मेहनत से क्रिएट किया था और जिसका हमें सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, हमें उससे पहचान भी मिलती, वो कोई अगर चुरा ले तो उससे हमें, अगर हमने क्रिएट नहीं किया होता तो शायद हमें उतना दुख नहीं होता कि हमने तो इसे खरीद के लाया था और चोरी हो गया। लाइक कभी किसी की घड़ी गिर जाती है, किसी की कोई ज्वेलरी गिर जाती है, तो थोड़ी देर का दुख होता है कि हमारा इतना पैसा खो गया। लेकिन अगर आपकी कोई टैलेंट से बनाई गई चीज है, वो अगर कोई चुरा ले जाता है और उस पर आपका नाम नहीं आता है, तो आपको ज्यादा दुख होता है कि हमने उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी खर्च किया था जो कि वापस नहीं आ सकता है, अपना समय, पैसा, टैलेंट सब कुछ लगाया था। सो therefore there is quite important to apply IPR whenever we are going to create something new or novel. The incentive or monetary gains which are critical to encourage research and discovery for future advancement. For example, combined value of Wipro's brand, patents, trademarks, and copyright is around $150 million. So that you can imagine, not only to get recognition, you also get very huge amount of money with your creation. Importance of IPR, it encourages innovation to reap full benefits of the innovation, to avoid infringement, कि कोई आपका इससे आपके बिना परमिशन के आपसे चुरा ना ले जाए, इसलिए IPR बहुत ही important है. For example, in 1979, Xerox lost US $500 million during the lifetime of the patent. Xerox, when he has developed Xerox machine, they take patent of it, but after expiry of patent, they do not file further application. And after that, so many Xerox companies emerged, so that the monopoly of Xerox machine was gone, and they lost about $500 million US. Researchers at the Indian Institute of Science missed filing a patent regarding a carbon nanotubes, published it in Science. Before going for patent, they published it in the Science journal, carbon nanotube. If they first go for patent and then for publication, then we have the patent of carbon nanotube, firstly developed by ISC Bangalore. In US, over 150 patents are filed on yoga asana, which has been used in India for more than 5,000 years. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस योग और आसन का जो अभी भी बहुत इस समय चल रहा है, 21 जून को हम लोग मनाते हैं योगा डे, ये सारी आसन और योग भारत की ही देन है, लेकिन इसके जो 150 पेटेंट्स हैं वो यूएस के पास हैं. Now the difference between author and inventor. Author is closely related to copyright. Author always went for copyright and inventor went for patent. Author works hard, inventor works hard. Both have documents observations. They interpret results. They not only interpret results, inventor, they also secures the purity of their experimental setup. And if he or she found that the experimental setup is unique and they are getting some unique things, then they file a patent. However, author communicates to a journal and journal take the copyright of that work, whatever author is giving to the publisher. Author is also contribute to knowledge. Inventor is also contribute to knowledge. Inventor is getting patent. Authors, if he is active, then he will get the copyright, or sometimes without taking copyright, he published his creativity, and sometimes his creativity is stolen by someone else. And both the copyright as well as patent are useful for society and mankind. So there is two broad class of intellectual property rights. In one, there is industrial properties like patents, industrial designs, trademarks, trade secrets, plant varieties, integrated circuits, geographical indicators, which we will discuss some other day. Today we will discuss the copyright, in which the literary work, novel, books, poem,
research papers, films, music, artistic work, drawing, photograph, performing arts, plays, sculptures, software, all come under copyright. So after getting the importance of, or after knowing the importance of IPR, IP offices are established in India under the Ministry of Industry and Commerce, Office of the Controller General of Patent, Design and Trademarks Act under the Ministry of Industry and Commerce, and the zonal offices are situated all over the India, like design wings are at Kolkata, patent office is at Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai. Trademark office is at Kolkata, Delhi, Mumbai, Ahmedabad and Chennai. Geographical indication registry is, the office is at Chennai. And patent information service, whatever information you want from for filing patent, you will get from Nagpur. Now you can see here, earlier the patent office was in this building. One room of this building was worked as patent office. And this is the parking of this office. Now the complete building dedicated to Delhi Patent Office. This is the library. Earlier it was like that. Now the sophisticated library is there. This is the working area before. Now, because funding, large funding is there in patent office, so the structure has been completely changed. The storage space is like that. Now automated storage space is there. This is the working area, which is combined with library area. Now the dedicated working area is there. This is the modernized waiting area, which was not earlier there because the space was very less. So this is the infrastructure development in India. Similarly, the strongness of intellectual property rights increases day by day. Now come to copyright. All the literary work, films, drama, music, artistic work, sound recording, everything which is the creation of our mind is come under copyright. The Copyright Act 1957 was emerged after the independence. Earlier, in the reign of the East India Company, the British enacted the copyright law in India, and that time it was known as Indian Copyright Act 1847, and this act was for the enforcement of English copyright rules in India. This was repealed and replaced by Copyright Act 1911, which was applicable to all British colonies. This one further modified in 1914 as Indian Copyright Act, and this copyright was replaced by Copyright Act 1957 in sovereign India. This act, Copyright Act 1957, was further amended in 1982, 1984, 1992, 1994, 1999, 2013, 2016, and recently it is notified in 2021. So copyright is the set of exclusive rights granted to the author or creator of an original work, including the right to copy, distribute, and adapt the work. Copyright provides protection for the expression of an idea and not the idea, whereas patent system provides protection for implementation of an idea. This is the symbol for copyright. Whenever you see the research paper or books, you can get this symbol and then the name of the organization or publisher which has obtained the copyright. There is no requirement for novelty or uniqueness as there is in patent law. I told earlier that in case of copyrights, novelty and uniqueness is not required.
only your creation, new creation, which is not reported earlier, is copyright by you. If you think that it is attract the or fulfill something for society or attract someone, or someone can get an idea from your creation, then you can go for copyright. So copyright law protects the expression of an idea, not the idea itself. अब आपको ये लगे कि हमने तो आइडिया सोच लिया, अब सोच लिया तो इसका कॉपीराइट हम ले लें, नहीं, आपको उसको एक्सप्रेशन भी करना होगा. जैसे मैंने कहा कि आपको इनटैंजिबल से टैंजिबल फॉर्म में उसको लाना होगा. तो आपकी आइडिया आया है, उसको कहीं पेन कॉपी लेके उसको लिखिएगा, सीडी में ले लिया, टाइप कर लिया, सीडी में ले लिया, तो उसका टैंजिबल फॉर्म होना जरूरी है. ये नहीं कह सकते कि ये अगर किसी ने अपना आइडिया एक्सप्रेस करके कॉपीराइट करा लिया तो आप जाके ये नहीं कह सकते ये तो मेरा आइडिया था, मेरे दिमाग में था, इसने कैसे. तो आपके पास प्रूफ नहीं, आपके दिमाग में था तो वो तो आपका था ही, है ना. आपको उसकी राइट लेने के लिए उसको टैंजिबल फॉर्म में करके जाके फाइल करना पड़ेगा कि हमको कॉपीराइट उसका मिल जाए. So copyright system protects original work of an author that is fixed in a tangible form of expression, is concerned with the publication and communication of the creative output of the authors. Royalty will be provided to authors, painters, artists, etc. Bestseller textbook Principle of Biochemistry by Leninger, Nelson and Cox. ये लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, जो भी बायोलॉजी के भी साइड के होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, सभी पढ़ते हैं इस बुक को, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री की बहुत फेमस बुक है. अब आप उस बुक पे भी अगर देखेंगे तो वहां ये लिखा होगा कि all rights reserved, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission to the publisher. यहाँ पे ये लगभग सभी पब्लिकेशंस में लिखा होता है जहां पे भी उन्होंने कॉपीराइट लिया हुआ होता है. तो उस समय आपको जब भी अगर आपको उसका कुछ पार्ट लेना है अपने पब्लिकेशन में या अपना कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें, तो आपको उनसे प्रायर परमिशन लेनी होगी. The types of work which are subject to copyright has been expanded over time, initially only covering books. Copyright law was revised in 19th century to include maps, charts, engraving, musical compositions, dramatic works, photographs, paintings, drawings, sculptures, all comes under copyright. Earlier, it was only for books. And in the 20th century, copyright was expanded to cover motion pictures, computer programs, sound recordings, choreography, architectural work, for all comes under copyright. Copyright come to be governed by the statutory law of each country. The main criteria for the copyright registration are its originality. हम जो आपसे बात कह रहे थे कि नोवेल्टी या यूनिकनेस नहीं, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आपके वर्क में. So examples are poems, artistic drawings, paintings, computer software programs, etc. Like painting of M.F. Hussain, through which he has created millions. Okay, so he must be thankful to copyrights so that he was able to gain such large amount of money. Infringement of photocopy rights of textbooks and circulation of pirated movies are very common in India. ये हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग में ही बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई महंगी बुक होती है उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं. बच्चे हैं वो भी इवन बहुत महंगी भी नहीं है, उन्हें लग रहा है 300 की बुक है, लो 100 रुपए में तो फोटोकॉपी हो जाएगी, तो वो फोटोकॉपी करा लेते हैं, जबकि ये भी आपके कॉपीराइट का उल्लंघन है. आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं आप. तो ये चूंकि ओनर देख नहीं रहा होता है कि इंडिया में इस तरीके से हो रहा है, या और भी जो ऑथर्स हैं वो नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं जहां आप उसको फोटोकॉपी कर रहे हैं, लेकिन दिस इज कम्स अंडर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. और मूवीज का तो हम लोग को पहले से पता है कि गाने हैं, मूवीज हैं, इन सब का भी कॉपी होता है. कभी इंग्लिश मूवी की कॉपी हो रही होती है हिंदी मूवी में, कभी साउथ की मूवीज का हो रहा होता है. तो ये हम लोग की रेगुलर प्रैक्टिस में है इंडिया में. सो व्हाट इज नॉट कवर्ड इन copyright? In copyright we can't cover ideas,
बताया कि आपके दिमाग में वो आइडिया कॉपीराइट आप उसका नहीं ले सकते until unless आप उसको एक्सप्रेस ना कर दें in the form of tangible items like am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Like ideas, facts, recipes, works lacking originality, names, titles, or short phrases are not come under copyright. Sometimes you can see that paper of same name and same phrases has been published by two authors, and both the publication has copyright. Okay. Like ऊपर नाम तो ठीक था, एक जैसा था, टाइटल था, लेकिन जो उसका कंटेंट था वो डिफरेंट था, रिटन राइटिंग वाइज डिफरेंट था, कुछ उसमें जो साइटेशंस दिए गए थे वो डिफरेंट थे, तो उन्होंने अपना अपना उसमें कॉपीराइट ले लिया. So filing of copyright, for getting copyright we have to file the copyright, and for that we have to fill the application form, register a copyright by completing a simple application form along with the appropriate fee. Need not send a copy of your work. It may appear with the same title, but if each work has been created independently, each will have its own copyright protection. ये अभी मैंने बताया कि हो सकता है सेम टाइटल हो, लेकिन चूंकि दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट वर्क है और वो कहीं ना कहीं डिफर कर रहा होगा, वर्ड टू वर्ड तो सेम होगा नहीं, साइटेशंस अलग अलग होंगे, एग्जांपल्स अलग अलग होंगे, तो उन दोनों कामों को, सेम टाइटल के भी कामों को कॉपीराइट मिल जाएगा और उनका पूरा जो उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया होगा वो अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन होगा. So the duration of copyright, author's lifetime plus 60 years from the end of the calendar year in which the author dies, or 60 years for film and sound recordings, 25 years for typographical arrangement of a published edition, and copyright protection always expires on December 31st of the last calendar year of the protection. Like आपने अगर मार्च में कराया है, मार्च 2022 में आपने कॉपीराइट लिया है, तो अगर वो 60 साल बाद खत्म हो रहा होगा तो वो दिसंबर में खत्म हो रहा होगा, 31 दिसंबर में खत्म हो रहा होगा. तो इस तरीके से जो ऑथर की लाइफ होती है उतना तो रहता ही है कॉपीराइट, उसके बाद भी 60 सालों तक रहता है जो आपकी उत्तराधिकारी को मिलता है. Now I come to the portion that is the main topic of my lecture, the role of copyright in academic research. This is the two publication. मैं इसको स्लाइड शो पे डालती हूँ, शायद बड़े में ये थोड़ा सा क्लियर दिखे. Is it visible? Yes, ma'am, but Visible. Okay, maybe this portion is hiding, but this two papers are visible. One is the review, which was published in Relevance in the year 2018, and this one is the research paper which was published in elsewhere in the year 2021. अब आप सभी देख सकते हैं कि ये सिंबल जो मैंने अभी बताया कि कॉपीराइट के लिए अप्लाई होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कॉपीराइट इस रिव्यू का विले ने लिया इन द ईयर 2018. सिमिलरली इस रिसर्च पेपर के लिए एल्सवेयर ने लिया इसका कॉपीराइट, ये कॉपीराइट का सिंबल है, और ये वहां पे नंबर भी दिया गया है कि क्या नंबर है इस कॉपीराइट का. और आगे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड. तो इसमें जितना भी कुछ छपा हुआ है, जो भी चीजें रिपोर्टेड है, वो सारी की सारी कॉपीराइट है, जिसका राइट्स जो है वो एल्सवेयर के पास है. अब अगर मान लीजिए आप कोई लिटरेरी वर्क कर रहे हैं, चूंकि साइंस फील्ड में है और साइंस या आर्ट्स फील्ड में भी है, और आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस पेपर में मान लीजिए पब्लिश्ड है और आपको वो साइट करना है, अपने उसमें लाना है, तो या तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में कर लीजिए, और अगर आप उसे अपनी लैंग्वेज में कंप्लीट, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है और आप इस पिक्चर को ही लेना चाहते हैं, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द विलेज. इफ यू आर टेकिंग इज इट एज सच इन योर आर्टिकल, देन यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम विलेज. और इफ यू आर टेकिंग सम the reported thing, whatever is published in this paper, then you have to ask to elsewhere. Similarly, these two books, well-known books, Advanced Organic Chemistry by Zerimash and Organic Chemistry by Claydon. The right of this book is with Ville, and the copyright was given in the year 1992.
However, the copyright of this book was with Claydon, Reeves and Warren. इनके ऑथर ने ही इसका कॉपीराइट ले लिया था इन 2012 में, लेकिन डेटाबेस के जो राइट्स हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिया था जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 2001 में। तो इसका भी जो भी कंटेंट है आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको कहीं पब्लिश कर रहे हैं और उससे कुछ आपको मॉनिटरी गेन हो रहा है तो वहां आपको कॉपीराइट का आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। तो एजुकेशनल पर्पस में कॉपीराइट का नहीं होता है अगर आप किसी को पढ़ाने के लिए उस चीज को लेके साइट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपनी किसी बुक में साइट करने जा रहे हैं तो यू हैव टू टेक परमिशन। अगर बिना परमिशन के लिए कर रहे हैं तो आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। इन्हीं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर हम या पायरेसी कह रहे हैं तो इसमें हमको प्लैगरिज्म भी समझना होगा, क्योंकि हम लिटरेरी वर्क की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक राइटिंग की बात करते हैं जब, तो प्लैगरिज्म टर्म हम लोग को पता होना चाहिए। प्लैगरिज्म इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन with or without their consent by incorporating it into your work without full acknowledgement। तो आपने किसी के काम को कॉपी कर लिया बिना उसको बताए या बिना उसको एक्नॉलेज किए। And all published and unpublished material, whether in manuscript, printed or electronic media form, is covered under this definition. And these are the 4 plagiarism software: Turnitin, Grammarly, Duplicate Checker, Pro Writing Aid, all are plagiarism software. And most of the institute nowadays have one of the software. So before going for publication, the university or colleges itself check the thing that you are not going to copy any one work in your work or not incorporate any work from others without taking consent. So before going for literary work or creating some literary work, we have to go for plagiarism to avoid copyright infringement. अब इसमें एक एग्जांपल है, जैसे अगर मान लीजिए मुझे आर्सेनिक टॉक्सिसिटी पे कोई आर्टिकल पब्लिश करना है और हमको एक जगह ऐसा पेपर मिला जिसमें आर्सेनिक टॉक्सिसिटी का ग्लोबल सिनेरियो दिया गया था, सारी कंट्रीज का इसमें दिया गया था रिकॉर्ड कि कहाँ कैसा है। और ये रिकॉर्ड जो था वो पब्लिश हुआ था यूनिसेफ की रिपोर्ट में 2007 में। अब ग्लोबल रिकॉर्ड मैं यहाँ से बैठ के नहीं निकाल सकती, तो मैंने क्या किया कि मुझे जो पब्लिकेशन करना है या जो आर्सेनिक पे वर्क करना है, मान लीजिए मुझे कोई मेथोडोलॉजी डेवलप करनी है कि जिसके थ्रू मैं आर्सेनिक रिमूवल कर सकूं, और मैं दिखाना चाहती हूँ कि व्हाई माय वर्क इज इम्पोर्टेंट, and for that I have to show the global scenario of arsenic toxicity. Then I will take this picture from this report. If I take this picture without informing the copyright owner, then it is come under copyright infringement. So before going to publish this in my work, I have to take permission from this copyright owner. Okay. So this is all about copyright. Last but not least, copyright benefits. It is public record of ownership that you are the owner of this property. Prima facie evidence, claim of damages. You can get the claim if you have copyright. Improves products market presence. So with these words, I have to stop my lecture here. Thank you all for patient hearing. Thank you, ma'am. I have one question, ma'am. जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर हम किसी पब्लिश वर्क में से कुछ कंटेंट उठा के अपने पेपर में लेते हैं तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर साइट कर रहे हैं तो क्या तब भी वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा और हमें परमिशन लेनी पड़ेगी पब्लिशर से? अनुराधा जी, ऐसा हो गया आप फोटोज या पिक्चर्स हम लोग Participants are requested to mute. Yes, ma'am. Yes, Dr. Anuradha. Actually, if you are going to cite references, like this line is from this references, then it's okay. You can cite the reference. But if you are taking the figure, picture, anything like that,
then you have to take permission. और अब आप देखिएगा जो अभी रिसेंट में आ भी रहे हैं लिटरेचर, अगर कहीं से कोई फोटो ली गई है तो वो वहां आगे उन्होंने लिखा है कि आई हैव टेकन परमिशन अर्लियर, है ना, विद परमिशन ही वो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये कि अगर हम साइट कर रहे हैं कि हमने सो एंड सो पेपर से ये पिक्चर ली है, तो हम तो साइटेशन तो वहां पर दे रहे हैं, तो तब भी परमिशन की जरूरत होगी? हाँ, तब भी एक्चुअली फोटो वगैरह के केस में है ये कि अब आप परमिशन ले लीजिए उनसे, और वो बहुत टाइम नहीं लगता, आप एक मेल डाल दीजिए कि हम इस फोटो को अपने उसमें लेना चाहते हैं, वो परमिशन दे भी देते हैं, बहुत इजीली परमिशन मिल जाती है। थैंक यू मैम। अभी तक तो हम साइट कर देते थे पिक्चर लेकर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते थे। नहीं, अगर आप मॉडिफाई कर दे रही हैं तो वो ओरिजिनल नहीं रह गया ना, तो आपने उसमें अपना आइडियाज भी डाल दिया ना। जी तो जी। तब तो आप कर सकते हैं, तब आपको पूछने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आप एज इट इज उसको उठा रहे हैं तब आपको उनसे परमिशन लेनी होगी, स्पेशली इन केस ऑफ दिस फोटोग्राफ्स और सम डेटा इज देयर, लाइक हमने अभी आपको यहाँ आर्सेनिक टॉक्सिसिटी का दिखाया ना कि इस तरह का अगर हम कोई ग्राफ ले रहे हैं, बार ग्राफ ले रहे हैं, है ना, तो उस केस में क्योंकि आप एज इट इज ले रहे होते हैं तो आपको यू हैव टू टेक परमिशन, you have to drop a mail, they will revert back you very soon. पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। ज्योति मैम, may I ask something? Yes, ma'am, please. Am I audible, Anuradha? Yes ma'am. Hello. Yes ma'am. ज्योति, मेरी आवाज आ रही है? Yes, अरे ma'am. अनुराधा, मेरी आवाज आ रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. मुझे ज्योति एक चीज क्लियर करना ज्योति जी से, कि जैसे हम लोग कुछ कोट करते हैं और वहां पर पूरा साइटेशन देते हैं तो वो ठीक है, लेकिन कई बार हम कई कंसेप्ट जब देने लगते हैं एक के बाद, तो हो सकता है कुछ लाइंस जो है वो हूबहू जाती है, तो वो लाइंस की लिमिट क्या है वो एक बार जैसा प्लीज क्लियर करें। मैम, अगर हम कहीं से, जैसे आपने कहा हम कोट ले रहे हैं, तो कोट को हम साइट भी कर रहे हैं जी, तो ऐसे अगर आप लाइन भी ले रही हैं और अगर आप उसको साइट कर रही हैं इन द रेफरेंस, नहीं अगर मैं जैसे ज्योति मैम, अगर मैंने मान लीजिए रेफरेंस बुक में उस बुक का नाम दे दिया है, तो ये इज इट ओके, और हमें उस लाइन के लिए पूरा साइटेशन अलग से देना पड़ेगा? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम, एक्चुअली ये फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है। जैसे लॉ में अगर हम साइटेशन दे रहे होते हैं तो हमको पेज के साथ वो लाइन का भी रेफरेंस देते हैं, लेकिन साइंस की फील्ड में जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, हम लोग सीधे देते हैं। ये है कि हम लोग साइंस में भी पेज नंबर दे देते हैं। हाँ, रेफरेंस बुक दिया, पेज नंबर सो एंड सो एंड पब्लिकेशन ऑफ दिस ईयर। हाँ, बिल्कुल मैम, बस उतना ही काफी होता है, क्योंकि हाँ, राइटिंग पार्ट जितना भी है जो आप मैन्युस्क्रिप्ट में राइटिंग पार्ट कर रहे हैं उसमें सिर्फ साइटेशन आप रेफरेंस का दे रहे हैं, दैट इज इनफ। बट इफ यू आर गोइंग टू टेक द पिक्चर फ्रॉम एनीवेयर, देन यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दैट पब्लिशर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स की बिहाफ में पूछ रही हूँ कि इस आईपीआर फील्ड में क्या करियर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, या स्टूडेंट्स इस फील्ड में कैसे अपने करियर को बना सकते हैं? मैम, क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, जो दिल्ली पेटेंट ऑफिस है वहाँ पे पेटेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होते हैं और उसमें एमएससी के बच्चों को और एमए के बच्चों को प्रेफरेंस भी दी जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा वर्क का पता होता है, उस हायर एजुकेशन में एक सीढ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, तो उनको प्रेफरेंस भी दी जाती है। तो पेटेंट ऑफिस में एज अ पेटेंट ऑफिसर इन बच्चों की नियुक्ति होती है। वहां से टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट निकलते रहते हैं, बच्चे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में या उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। Any other query from the participant? Ma'am, I have a question. I wanted to know, ma'am, what is the difference between copyright infringement and plagiarism? I mean, is there any difference or is it the same thing? Actually, both are different, because for plagiarism, you are not getting any royalty. Plagiarism is that it is the software which check the copying portion, whatever is copied. Sometimes some software are very good, just Turnitin is very good.
they also check, or Grammarly is also very good. They also check the sentence framing. These software also check the sentence framing, and they only tell you that what portion are copied from somewhere. It not tell about, it is not related to copyright in that term कि आपको कुछ रॉयल्टी मिलने वाली है. जैसे कॉपीराइट आप लेते हैं तो आप उसके ओनर हो जाते हैं. प्लेगरिज्म करके या सॉफ्टवेयर खरीद के आप उसके ओनर हो जाएंगे, लेकिन आप का कोई वो क्रिएशन नहीं है. यू कैन ओनली चेक योर मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हाटएवर यू आर गोइंग. आई वांटेड टू नो कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर हम करते हैं उसमें एंड प्लेजरिज्म में क्या डिफरेंस है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में भी तो मैम यही हुआ ना कि आपने कॉपीराइट लिया है, और कॉपीराइट लिया है तभी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ना. और इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो आप पे पेनाल्टी लगेगी. ठीक, अब वो पेनाल्टी क्या होगा? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कोर्ट होगी. कोर्ट आपको, आपका केस जो चलेगा वो कोर्ट में चलेगा और वहां पे आपको पेनाल्टी लगेगी. लेकिन अगर आप प्लेगरिज्म कर रही हैं तो आपका प्लेगरिज्म कौन पकड़ेगा? पब्लिशर पकड़ेंगे. जैसे अभी हमने कोई मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की और उसे भेज दिया जर्नल में किसी, तो वो लोग भी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर रन करेंगे हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में. और अगर उसमें उनको तो कुछ मिल रहा है और मेजर पोर्शन, जैसे 10% तक प्लेगरिज्म जो है वो कोई मायने नहीं रखता है. अगर 10% तक या 7-8% है तो, लेकिन बियॉन्ड दैट है तो समटाइम यू विल बी बार्ड 2 or 3 years. वो जर्नल आपको बार कर देगा कि डोंट सेंड एनी काइंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट टू अस, है ना. तो कॉपीराइट का जब आप तोड़ते हैं तब होते हैं. तो प्लेगरिज्म में आपको कुछ ऐसा राइट्स नहीं मिल रहे होते हैं. वो आप सिर्फ एक चेकिंग सॉफ्टवेयर है कि आपने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया है. Thank you. वेलकम. मैम Any other- वन क्वेश्चन मैम. Yes sir, yes sir. मैम इसे हम लोग लाइफ साइंस में रिसर्च पर लिखते हैं और उसमें बहुत तरह के बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर फार्मूला मेंशन करने होते हैं. तो एक स्ट्रक्चर फार्मूला तो मैम वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो किसी ऑथर ने कर रखा है और हम लोग मोस्टली प्रैक्टिस में होते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज तो होना नहीं उस मॉलिक्यूल्स के. तो क्या उस केस में क्या हम उस स्ट्रक्चर को एज यूजुअल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और डिफरेंस हम दे देते हैं, या फिर टेबल के नीचे लगा देते हैं कि डिफरेंस टेकन फ्रॉम दिस सोर्स? एक्चुअली क्या करना होगा? जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि इसका कॉपीराइट्स का भी एक लाइफ टाइम होता है. तो जब अगर हम डीएनए और आरएनए का भी स्ट्रक्चर, जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं और डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, तो दैट लिटरेचर इज वेरी लॉन्ग बैक एंड आई थिंक कि उसका कॉपीराइट भी खत्म हो चुका होगा. अब आप उसमें कोई अपने इफेक्ट्स डाल रहे हैं तो वो इफेक्ट्स डाल के उसको आप और क्रिएटिव कर दे रहे हैं. जैसे आप कभी देखेंगे कि उसका कार्टून स्ट्रक्चर होता है या कुछ और तरह का स्ट्रक्चर होता है. और वो भी आप देखिएगा कि जैसे कुछ साइट्स हैं जैसे shutter.com करके है, तो वो तो पूरा ऊपर एक अपना डाल रही होती है कि हम इसके कॉपीराइट को ले चुके हैं. तो अगर आप उसको लेना चाह भी रहे हैं तो वो बीच में लिख के आ ही रहा होगा. आप पूरा कंप्लीट क्लियर नहीं ले पाएंगे और वो पूरा मेंशन रहता है कि इसका कॉपीराइट है कि नहीं. तो अगर जहां जहां आपको दिख रहा है कि कॉपीराइट है तो व्हाई यू आर गोइंग टू ट्रबल, यू कैन आस्क टू. और कोई भी, मैंने आपसे कहा ना कि लिटरेरी वर्क है तो कोई भी आपको सपोर्ट जरूर करेगा. वो कह लेगा कि हाँ आप ले लो, है ना, क्योंकि आप उसको भी तो साइटेशन मिल रहा है ना. कई बार आप देखते हैं साइट स्कोर्स होते हैं, जो स्कोपस वगैरह में आप साइट स्कोर्स होते हैं वो उनके साइटेशन के ही तो होते हैं. तो जितना ज्यादा साइटेशन होगा, हाँ, तो आप इट्स बेटर परमिशन प्रायर बिफोर पब्लिशिंग योर आर्टिकल और मैन्युस्क्रिप्ट. ओके, और अगर कॉपीराइट खत्म हो गया तो कोई बात ही नहीं है. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. Any other question from the participants? Okay. Thank you, ma'am, for your very impressive insight on the theme. Now, I would like to request Dr. Riya Mukherjee for formal vote of thanks. Dr. Riya Mukherjee. Kindly unmute yourself, Dr. Riya. Thank you, ma'am, for your beautiful lecture. It was indeed very enlightening and full of insights and with plenty of examples. I'm sure all of the participants have benefited a lot from it. I begin this vote of thanks by expressing my heartfelt gratitude on behalf of IPR Cell, IIC SS Khanna, and IQAC on this occasion of World Copyright Day. I would first extend a heartfelt thanks to our session's distinguished guest, Dr. Jyoti Pandey from Bhimrao Ambedkar University for this lecture.
Thank you, ma'am, for sparing some time from your busy schedule and enlightening us with your knowledge and experiences on the topic of copyright. Thank you for such a lively and interactive session also. I would like to thank our principal, who could not be here with us because of some problem, but because for her unwavering support. For us, I would thank our senior faculty members, Dr. Manjari Shukla, Dr. Meenu Agrawal, and our vice principal, Dr. Nisha Sachdev, for their support and motivation to organize this program. I would also like to extend my cordial thanks to Dr. Anuradha Singh and all the members of the organizing committee, Dr. Nishi Seth, Dr. Akhlaqur Rahman, Dr. Neeta Sahu, Dr. Soumya Krishna, Dr. Tanushri Roy, Dr. Shruti Anand for all of their efforts, and all the other members of IQAC, IPR Cell, and IIC. I'm sure all our students have benefited a lot from this lecture, from the nuances of IPR, from the nuances of copyright, and I'm sure they'll be able to they formulate a path of their own in IPR and be able to understand the topic more closely. I thank you, ma'am, for being here, and I thank you, everyone. Back to you, Anuradha, ma'am. Thank you all. Thank you, Riya. So we moves on the end of this session, and Jyoti ma'am, we are eagerly waiting for your next lecture On 26th. Okay, World ma'am. IPR Day. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I will talk to you telephonically about that. Okay, thank you. Bye. Okay. Thank you, ma'am.